जी हां, हम जीतेंगे क्योंकि डरना नहीं बल्कि लड़ना है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। देश इस वक्त महामारी के संकट से जूझ रहा है। तमाम परेशानियों के बीच जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पॉजिटिव बने रहना, सकारात्मक बने रहना। हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि पॉजिटिव अगर रहे तो कोरोना जैसी महामारी को भी मात दी जा सकती है, हराया जा सकता है। अब लोगों में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए कोविड रिस्पांस टीम यानी कि CRT, समाज हितैषी नागरिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने एक पहल की है। महामारी से निपटने के लिए भारत के व्यापक प्रयासों के बीच समाज में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने के लिए पॉजिटिविटी अनलिमिटेड हम जीतेंगे व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है और ये व्याख्यान श्रृंखला आज से 15 मई तक आयोजित होगी। व्याख्यान श्रृंखला में सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, आचार्य प्रमाण सागर जी, श्री श्री रविशंकर जी, अजीम प्रेम जी, शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती जी, पद्म विभूषण सोनल मान सिंह, आचार्य विद्यासागर, महंत संत ज्ञानदेव सिंह, केंद्र और राज्य सरकारों ये तमाम पुरोधा संबोधित करेंगे। इस आपदा से निपटना व्याख्यान श्रृंखला का समापन 15 मई को RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत करेंगे। आज व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत सदगुरु जग्गी वासुदेव जी और जैन मुनि आचार्य प्रमाण सागर के संबोधन से हो रही है। CRT ऐसी ही कोलैबोरेटिव पहल का परिणाम है। इसके अंतर्गत समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े साझेदार एकजुट होकर आपदा को पराजित करने के लिए सामने आए हैं। कोविड रिस्पांस टीम ने कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। अब हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड व्याख्यान श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य समाज के आत्मविश्वास का संचार करना एवं हम अवश्य जीतेंगे इस भाव के साथ समाज को कोरोना की जंग के विरुद्ध एकजुट करना है। 11 से 15 मई 2021 के बीच संचालित होने वाली व्याख्यान श्रृंखला में समाज के एमिनेंट पर्सनालिटीज जैसे ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी, विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन श्री अजीम हाशिम प्रेम जी, श्री कांची कामकोटि पीठ के जगत गुरु पूज्य शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती जी, पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मान सिंह जी, मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज, श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के पीठाधीश्वर पूज्य श्री महंत संत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी संबोधित करेंगे। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी नमस्कार। कोविड रिस्पांस टीम दिल्ली की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की व्याख्यान श्रृंखला के क्रम में आज हम सभी को पूजनीय सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। पूजनीय सदगुरु जग्गी वासुदेव आध्यात्मिक गुरु एवं सुप्रसिद्ध लेखक हैं। आपने 8 भाषाओं में अनेक चर्चित पुस्तकों की रचना की है। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। ईशा फाउंडेशन भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, लेबनान और ऑस्ट्रेलिया समेत अनेक देशों में योग की शिक्षा देता है। ईशा फाउंडेशन कई सामाजिक और सामुदायिक विकास की योजनाओं पर भी काम करता है। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने आपको सामाजिक सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। कोविड-19 के चलते समाज में भय और निराशा व्याप्त है। ऐसे में समाज में पॉजिटिविटी लाने के लिए क्या क्या प्रयास जरूरी हैं? हम सदगुरु जग्गी वासुदेव जी से अनुरोध करते हैं कि वो हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। These numbers of daily cases, all these are not relevant right now because we've reached a point where the numbers could be 5x or 10x of what is being tested, because you cannot test 1.3 billion people in one day to find out how many people actually. So these numbers are more maybe a little bit of a guidance for the administration, but I think it is time to shift to a place where educating people, I mean,
and it's already been done, but I'm saying more stringently because anything that you need to communicate in our country, you have to do it in 24 languages, so it is very hard. How to handle this, what level of symptoms, how to handle it, if you're asymptomatic, how to be. It is not necessary we should go on testing because testing is irrelevant. Almost everybody has it all right now. Already it's going there. If it is not there, it will get there in the next few weeks because this is not something you can contain like that. You can only see how to boost your immunity, increase your lung capacity, what are the sensible things to do. And the few things that that you mentioned of panic, frustration, fear, anger, none of these things are going to help us. Because this is not a time for grandstanding each other, this is not a time to point fingers at each other, this is a time to stand up. Not even as one nation, as one humanity, we need to stand up because right now I'm here in the United States, well, everything seems to be normal, all the traffic is normal, commerce is going on, industry is going on, everything is going on. But it is just probably a question of weeks or maybe a couple of months before this virus, this particular variant that we are suffering in India, could be all over the world in no time because you cannot contain it like that within a country. National borders are not a limitation for this. So this is a time to really understand. This is a generational challenge. How are we going to come out of this? What are the simple things? Everybody should know what are the few simple things that they must do rather than pointing fingers at each other because it's an invisible enemy. It doesn't matter what the administration does, it doesn't matter what people do, what they think. It will spread because you cannot really stop it. One simple thing I'm saying right from last 14 months, see, if only we had the necessary integrity and discipline that we did so many weeks and weeks of lockdown, but they were only partially effective because only a certain number of people actually follow this recommendations or enforcement. Because now we are no more calling it lockdown, we are calling it curfew in some of the places. So curfew means it has to be forcefully enforced. However much you enforce, it's not going to be absolute unless every one of us gets it. Well, that's a difficult thing to do, to make the entire population get it. I would say at least the urban population. If you make the entire urban population in India to understand 14 days, if you do not come in touch with any human being, if you just stay only with those 1 or 2 people who are not infected in your family or whatever, do not come in contact with anybody for 14 days, you would definitely drop it down. See, this is a war-like situation, let's understand this. When there is a war-like situation, that means there's an external enemy. That's what war means. But right now, the enemy is invisible, so let us bash each other. If this is the logic, well, we are definitely headed for a major disaster. Now when there is a war-like situation, at least when there is a war-like situation, irrespective of what we believe in, it's important for us to pool our resources and see how to come out of it. Let's be realistic. India as a nation definitely does not have necessary infrastructure to service 1.4 billion people, either in terms of hospitals or toilets or temples or streets or roads or ports. We don't have enough infrastructure. That's a reality which we are trying to change, which is a onerous task. It's not a simple thing, it's not going to happen overnight. Having said that, now you want to be angry with somebody. You can be angry. There is substantial medical evidence. I will show you our own institution in the Harvard Medical School has done a lot of research on this, clearly showing when you are angry, when you are agitated, when you are fearful, in these conditions, your immune system goes down, you become far more vulnerable. So right now the question is just this, we've gotten used to this. If something goes wrong, bash somebody. If something goes wrong, bash somebody. No, right now it is just this. Do you want to be part of the solution or do you want to be a problem? Do you want to make a problem out of yourself? Now, one fundamental responsibility all of us have is that we stay healthy as individuals, we stay healthy and we stay alive.
Now there are people in social media who envy people who are healthy, people who are doing well. No.